Hello. So good afternoon to all. Good afternoon, sir. So actually, any issue regarding voice, kindly tell. Otherwise, I continue. Okay, I think it is clear. So now, I'm sharing you the screen of that link which we have been provided by the university. So now, if I click on this particular link, here we will go. So if I open this link, just wait, the link is getting open. Wait, this is your second lab, no? Okay. So it is just opening the straight. We are getting that particular page. Okay, so ये पेज सभी को दिख रहा है? This page is visible? Yes, sir. So, okay, okay. So previously, I think the introduction was there regarding the experiments clear, and then we come to the introduction of 8085 microprocessor. We have covered some objectives regarding that, and then we come to the architecture and pin diagram, and some other signalings are there. So we all have discussed, I think, in the previous term. ये सब चीजें डिस्कस हुई थी क्या प्रीवियस टर्म पे? हेलो, हेलो. Kaushik is there. Kaushik is saying. Yes, sir. Okay. Have you attended the previous lab? Yes, sir. Okay, okay. So, what I have discussed, can you just tell क्या हमने discuss किया था? बताएंगे? No information. Okay. So, can anyone explain what I have discussed previously in the last lab before going in the continuation of that? I just want to the preview of that. कोई बताएगा मुझे क्या मैंने बताया था? I think you all are around 29 people which are connected right now, and nobody are able to give me the previous information. Sir, you have told the preview of experiments and we were just going through how to update the link.
Okay. And this is your second lab, no? So after the zero lab. Okay, okay. That was the zero lab and this is the first lab. Huh? Yes. Yes, sir. According. Okay, okay, okay. So I have just give you the preview of the experiments. Clear? That covers into the microprocessor and this microcontroller lab. Clear? The code is KEC 552 and previously it was exactly in the second year, that is fourth semester. Clear? Now it is in the fifth semester. Clear? So some experiment also have been changed, but the content are almost same. Clear? कुछ एक्सपेरिमेंट इधर उधर हुए हैं बट बहुत सारे में कंटेंट लगभग लगभग सेम है. So that are totally programming based and कुछ आपका हार्डवेयर बेस्ड है. हार्डवेयर as well as software both are involved. Clear? If you talk about microcontroller, so they are all are hardware and software based. So we perform the experiments on the kit also. Clear? जो रीडिंग्स आएंगे आपकी किट पे ही आएंगे, that is having some LED or LCD type display. It will give you the readings. Clear? So 8085 is the first base. आपका जो पहला माइक्रो प्रोसेसर हमें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड डिस्कस करना, that is 8085. और इसमें हम लोग को we will perform the addition of hexadecimal numbers. So if you see जब मैं इस पे एक लिंक हमें दिया गया है, that is regarding virtual lab activity. Clear? So when I just access on that particular link, we come to the interface like this. जैसे आपको दिख रहा होगा अभी पेज. Clear? And suppose that is exactly monitored by the IIT Bombay and some college near to that, that is Dronachar College of Engineering. So if suppose I am accessing on this first experiment, and when I perform clicking on this, we go to the interface like that. Yes. So it covers basically the aim and then introduction page. Here introduction page, you can see this is the introduction regarding 8085 microprocessor. It covers what the basics of 8085 microprocessor, which you all are studying in this semester also. So regarding that, what are the address bus, data bus, control signal bus, status signals, clear, and so many other things are there. And then interrupt signals is also there. Interrupt, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा 8085 is having 5 interrupt signal. That is what a type of hardware interrupt. दो interrupt होते हैं, hardware and software. So it is having 5 interrupt, that is hardware interrupt, and around 7 software interrupt. Am I right? Okay. RST 0 to RST 7, around 8 software interrupt and 5 hardware interrupt are there. So if you talk about these 5 interrupt signals, that is hardware based. So INTR, RST 7.0, RST 6.5, RST 5.5, and trap, in which trap has the highest priority. Yeah, trap signals, trap जो interrupt होता है उसकी priority बहुत highest होती है. मतलब अगर माइक्रोप्रोसेसर कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है, कोई करंट टास्क एग्जीक्यूट कर रहा है और सपोज उसी ड्यूरेशन में ट्रैप सिग्नल ब्लिंक करता है, मतलब ट्रैप इंटरप्ट आपका ब्लिंक करता है, तो इट विल जस्ट ट्राई टू solve that particular instruction that is coming in instantaneously and then holds the current, जो भी उसका करंट टास्क होगा उसको होल्ड कर लेगा, और जो इंस्टेंटेनियसली टास्क आएगा, क्योंकि ट्रैप इंटरप्ट है तो उसको आप प्रायोरिटी देता हुआ उसको पहले सॉल्व करेगा. ठीक है ना? तो दिस इज ए टाइप ऑफ हार्डवेयर इंटरप्ट. And then machine cycles are also there. Input output right, and so many other things are there. So these
these are covered in this particular microprocessor. Clear? So now if we come to the next, there are so many other things. So इसके बाद ये आपका आर्किटेक्चर है जो कि पिन डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है. दिस इज अ 40 पिन स्ट्रक्चर. क्लियर? So in this 40 pin structure you can see all the things that are important to this 8085 microprocessor architecture are covered on individual pins. Clear? Like suppose the pin third represent reset out, fourth represent serial output data, that is SOD, fifth one represent SID, that is serial input data, sixth one is the trap, that is the hardware interrupt, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, then interrupt request and then interrupt acknowledge, that are on 10th and 11th pin. You can see सभी को डायग्राम विजिबल हो रहा है? Yes, sir. Okay. You all have studied about 8085 microprocessor this semester. Yes, sir. Okay. So I think I'm just revising some information, not the complete information regarding 8085 microprocessor. I'm just revising in a very fast manner. Clear? जिससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया लगेगा आपने क्या पढ़ा था. ठीक है? बाकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोग बाकी सारा जो एक्सपेरिमेंट रेलिवेंट है वही चीजें डिस्कस करेंगे. तो बस अभी मैं थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ 8085 से. क्लियर? उसके बाद आपका AD नॉट, AD1, AD2 अप टू AD7 ये क्या है? एड्रेस लेस डेटा बस है. क्लियर? इसमें एड्रेस और डेटा बस दोनों मल्टीप्लेक्स हैं. क्लियर? बोथ आर मल्टीप्लेक्स, सो एड्रेस और डेटा दोनों कैरी कर रहा है. तो दीज आर व्हाट LSB टाइप इंफॉर्मेशन. तो LSB कहते हैं. और जो हमारे पास A8 टू A15 है ये केवल एड्रेस इंफॉर्मेशन कैरी करता है. इसको MSB बोलते हैं, मतलब हायर ऑर्डर एड्रेस है. ठीक है? और ये लोअर ऑर्डर एड्रेस विद डेटा बस है. ये आपका जो AD नॉट से लेके AD7 तक है, ये आपका एड्रेस मल्टीप्लेक्स डेटा बस. क्लियर? इसमें एड्रेस एज वेल एज डेटा है, और जो आपका A8 से A15 है वो हायर ऑर्डर एड्रेस है. ठीक है? इसके बाद दो स्टेटस सिग्नल है, S0, S1, then read write var, then ALE, that is address latch enable. फिर आपका HLDA, hold सिग्नल. क्लियर? ये सारी चीजें भी हैं. तो ये सारी चीजें हमारी इसमें पूरी आर्किटेक्चर पार्ट में या एक पिन डायग्राम में कवर होती है. ठीक है? Now if we talk about the complete architecture, if you see, this is the architecture of 8085, which tells you about how we can perform the any kind of operation in this 8085 microprocessor. So architecture exactly represents the what? The processing of the how you can perform the task. So it just go give you the overview of the task performed by this system. Clear? So ALU exactly perform the task of processing like arithmetic or logical, whatever is that. We are getting, suppose we want to add or subtract or multiply or divide two data. Clear? So what we will do, we exactly have two storage place where we store the data initially. So initially, suppose we have a temporary register and the accumulator. So we just store the data into the temporary register. That is what you can see before ALU. We are having what? Two arrow lines. Clear? We are having these two arrow lines. First one is this and another is this. Clear? So once एक आपकी arrow lines that is connected to accumulator and going to the ALU section, while the second arrow line is going from the temporary register to ALU. So suppose we want the addition of two data. Suppose we are having A plus B, and then the final result is stored in the accumulator again A. Clear? So we have an accumulator which is having a data of hexadecimal digit. Clear? Also B is having a data. Clear? And suppose we want to add both A and B.
So both hexadecimal numbers. So we will get final hexadecimal number, finally hexadecimal number, which will be stored in the accumulator again. So this process will be happen with this activity means we have the accumulator में हमारे पास suppose एक data है, then we have temporary register, we have another data, suppose we want to add them in the ALU, then we will get the final result which is going to here from this position and goes to the internal bus. Suppose it is a 8-bit because microprocessor is 8-bit type 8085, so 8-bit information will be there, and again it goes to what, the accumulator section where the data will again stored. So accumulator is connected with the 8-bit internal bus with bidirectional manner, means it also transfer the data as well as it accept the data by the bus. तो जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ से होकर जब जाएगा ALU से होकर ऊपर बस के पास, तो बस से वो फिर फाइनली एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा. तो दिस इज हाउ द प्रोसेस इज गेटिंग अचीव्ड. क्लियर? आई थिंक ये समझ में आ रहा है आर्किटेक्चर. We are also having timing and control information which generally controls the whole processing. Clear? With some instant of time. Timing exactly क्या है? Timing and control basically machine cycle में बहुत important role play करता है. जब आप machine cycle discuss करते हैं तो हर एक slots में जिस time T1 time slot, T2 time slot, T3 time slot, सब में क्या है, एक अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं. कभी कोई पिन हाई होती है, कभी कोई पिन लो हो जाती है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना. तो टाइमिंग एंड कंट्रोल exactly block exactly monitors the whole system. Clear? मेरी आवाज सभी को आ रही क्लियरली? Yes, sir. Okay. So you all have studied something like that or some different things are there? Okay, so if you can see A8 to A15, that is what higher ये most significant bits बोलते हैं एड्रेस की. अभी मैंने आपको बताया था ये हायर और ऑर्डर एड्रेस होता है. इसको MSB बिट्स भी कैरी करता है, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं. और AD0 से AD7 क्या है? मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा बस है, जो कि आपका लोअर ऑर्डर बिट्स या लीस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट्स को कैरी करता है. ठीक है, बाकी ये चार ऑपरेशन स्टेटस सिग्नल के लिए हैं. अगर आपका स्टेटस सिग्नल 0 है तो हार्ट ऑपरेशन होगा. अगर स्टेटस सिग्नल्स आपके 0 1 है तो राइट ऑपरेशन होगा. अगर 1 0 है तो रीड ऑपरेशन होगा. अगर 1 1 है तो ये इंफॉर्मेशन को फेच करेगा. फेच करने का मतलब है इंफॉर्मेशन को लेना कहीं से. ठीक है ना, इंफॉर्मेशन लेगा कहाँ से? मेमोरी डिवाइस से. ठीक है, यही तो माइक्रो प्रोसेसर का काम है, इंफॉर्मेशन को फेच करना. फिर उसको क्या करता है? फेच करता है, डिकोड करता है, देन एग्जीक्यूट करता है. दिस इज द होल प्रोसेसिंग ऑफ व्हाट? माइक्रो प्रोसेसर. क्लियर? सो ये आपका एक वो फ्लो डायग्राम है विच एग्जैक्टली रिप्रेजेंट द कंप्लीट प्रोसेस. सपोज इफ यू वांट टू get two data and you want to apply some arithmetic on logical operation, so you need to, अगर hexadecimal है तो आपको HLPR रजिस्टर में उसको स्टोर करना पड़ेगा. अगर some octal some other type एक 8 बिट का डेटा है तो आप उसको डायरेक्टली मतलब आपको एक एग्जांपल की तरह समझाने की कोशिश करता हूँ. जस्ट ओके, सो पहले हम लोग ये थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं अभी आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कैसे कैसे हम लोग प्रोग्रामिंग में कैसे डेटा को लेते हैं, कैसे उसको अरिथमेटिक ऑपरेशन लगाते हैं. क्योंकि हम लोग का पहला स्टेटमेंट यही है, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड 2 हेक्साडेसिमल सपोज. क्लियर? अगर कैरी आएगा तो क्या होगा? जैसे आप लोगों ने फ्लैग पढ़े होंगे 8085 में, कौन कौन से फ्लैग पढ़े हैं? कोई बता सकता है हाउ मेनी फ्लैग्स आर देयर इन 8085 एंड व्हिच फ्लैग्स आर देयर? कैन एनीवन एक्सप्लेन? What are the different flags in 8085 microprocessor?
बताएगा या मैं ही बता दूं? ओके, सो आप लोगों ने कुछ फ्लैग्स पढ़े हैं, जैसे साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ये सारी फ्लैग्स पढ़े हैं? हेलो, ये आवाज आ रही है? हेलो, Yes, sir. फ्लैग पढ़े हैं ये? Yes, sir. ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लैग? फ्लैग का क्या काम होता है? अच्छा, मान लीजिए अगर हम दो हेक्साडेसिमल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हमें कैरी मिलता है, सपोज हमें कैरी मिल रहा है, और ऐसी भी कंडीशन हो सकता है कैरी ना मिल रहा हो, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फ्लैग? फ्लैग रजिस्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हेलो, आप लोगों ने देखा होगा ये जो आर्किटेक्चर है, इसमें यहाँ फ्लैग रजिस्टर भी लगा हुआ है। एलयू के जस्ट पहले देखिए लगा है ना, ये एलयू विल परफॉर्म द टास्क, लगा हुआ है ना फ्लैग रजिस्टर। कहना चाह रहा हूँ, कैन एनीवन ऑफ यू एक्सप्लेन व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लैग रजिस्टर? सपोज अगर कैरी आता है तो कैरी आने पे फ्लैग रजिस्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऋतुपूर्णा जी, ऋतुपूर्णा गुप्ता इज देयर? Yes, sir. क्या बताएंगे आप, फ्लैग रजिस्टर का क्या रोल है? Hello. हेलो, ओके, बताएंगे? Hello. हेलो, Yes, sir. हु इज देयर? Yes, sir. मेरा क्वेश्चन ये है कि ये फ्लैग रजिस्टर का क्या काम होता है? सर वो प्रेजेंट में जो हो रहा है उसका स्टेटस बताता है, जो अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहा है हाँ, उसका उसका स्टेटस। स्टेटस बता, अच्छा यस, स्टेटस बताता है, क्या स्टेटस बताएगा? वही कैरी भी जनरेट हो रहा है या नहीं। अच्छा, ओके, देखिए मान लीजिए एएलयू क्या करेगा, एएलयू में जब ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए कैरी आ गया, ठीक है, तो इसमें हमें पता है कि जो हमारे पास 8085 में फ्लैग रजिस्टर है, इट इज हैविंग कैरी फ्लैग आल्सो, क्लियर? तो अगर कैरी आ रहा है तो कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा, अपनी जीरो वैल्यू से वन वैल्यू पे सेट हो जाएगा, क्योंकि यू आर गेटिंग सम कैरी, क्लियर? तो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ दिस 8085 माइक्रोप्रोसेसर, each and every block वर्किंग साइमल्टेनियसली, हर एक चीज आपस में सिंक्रोनाइज्ड है, ऐसा नहीं कि कोई एक वर्क कर रहा है तो कोई एक दूसरा कुछ, जब एक में कुछ चेंज आएगा तो वो दूसरे पे जरूर रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है? जैसे एएलयू में जब दो हमने नंबर्स को ऐड किया, दो हेक्साडेसिमल नंबर्स, एंड वी आर गेटिंग सम कैरी, so carry will be also mentioned in the carry flag into the flag register, clear? So carry flags will be set to 1, और अगर कोई कैरी नहीं आता है तो कैरी फ्लैग इनटू द फ्लैग रजिस्टर विल बी 0, वो 0 ही रहेगा, क्योंकि यू आर नॉट गेटिंग एनी कैरी, ठीक है? सो एग्जैक्टली जो फ्लैग रजिस्टर है तो एक तरह से स्टेटस को मॉनिटर करता है कि व्हाटएवर अरिथमेटिक और लॉजिकल स्टेटस आर देयर, क्लियर,
accordingly it will update itself. Clear? अपने आप को update कर देता है. ठीक है? So we all have covered these things. So now we come to the theory part. This is some theory. Clear? You can see regarding some programming also. Clear? Some addressing schemes, some instructions are also given. So you need to know that जैसे MVI हमारा होता है mode immediate data. कुछ instructions हैं जो हमारे यूज होते हैं इस प्रोग्रामिंग में, असेंबली लैंग्वेज टाइप प्रोग्रामिंग में. तो आपको इंस्ट्रक्शंस को याद रखना है. जैसे MOV क्या होता है? मूव M to A. MOV A, M का मतलब है मूव M to A. M का जो डेटा है वो उसको A में मूव करा देना. ठीक है? तो इस तरह से आपको कमांड्स याद रखनी होंगी. DAD का मतलब होता है डबल एडिशन. ठीक है? बेसिकली डबल एडिशन कहाँ यूज करते हैं? जहाँ जैसे हम HL पेयर कंटेंट वगैरह यूज करते हैं, जब हेक्साडेसिमल नंबर्स को स्टोर करते हैं उनको ऐड करने के लिए, तो हम लोग HL पेयर को यूज करते हैं. ठीक है? फिर आपका है JNC एड्रेस, दैट इज व्हाट, इसको जंप इफ नो कैरी. एक होता है JNC, एक होता है JC. अगर कैरी आ रहा है तो हम JC यूज करते हैं. ठीक है? अगर कैरी नहीं आ रहा है तो JNC यूज करते हैं. जंप इफ नो कैरी. तो अगर कोई कैरी नहीं है तो वी विल यूज JNC कमांड. ठीक है? इसके बाद INR है, दैट इज इंक्रीमेंट रजिस्टर. INX है, दैट इज इंक्रीमेंट रजिस्टर पेयर. ठीक है? तो इस तरह से एड M फॉर एडिशन होता है. STA एड्रेस मीन्स फॉर स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्ट. ठीक है? SHLD की मीन्स स्टोर HL डायरेक्ट. तो ये से कुछ कमांड्स है जो आपको पता होनी चाहिए. नाउ वी कम टू द ये इसको भी छोड़ दीजिए. Some questions are also there. So if we come to the procedure of that, clear? So if we talk about the procedure of that, so एक minute. So I am just clicking on this video and you all can see. इसको जरा एक वीडियो में ये आपको दिखा रहा हूँ. थिंक ये सभी लोग इसको देखिएगा. ये दिख रहा है सभी को? Yes, sir. I'm just clicking on this. Welcome to 8085 Zubin Simulator. This window consists of two parts. One is editor window and the second is output window. You write the program at editor window, आवाज आ रही सभी को? assemble it. Yes, sir. आवाज आ रही सभी? आवाज आ रही इसकी Yes, sir. वीडियो की? Then you can check the output at output window. The output may be stored at various locations and you can check it under the register tab for the accumulator, general purpose registers and current location. You can also check that same output according to memory address and its value. If you have connected your device to any other interfacing device, you can check the output at devices. Coming back to the editor window, suppose I want to perform addition of two 8-bit numbers. Then I will copy the code from the addition of two numbers under the heading code and result and will paste the same in the assembler. This program says that your program starts from address 7000H. You are taking the first input at 7501, the second input and the output is generated at 7503. The two input you are taking are 12 and 13. Now I am going to assemble this program. This program is giving me two options to assemble it. One, run all at a time, and the second is step by step. For your better understanding, I will perform step by step assembly. For this, change the starting address to 7000 as per your program and click on step by step. Go back to the result output and click on forward. Like the first line. That means currently you are executing the first line.
And you can see There is a 12 glitch in the at voice. again press forward. It will move you to the accumulator. That means your value has been moved to the accumulator. Again say forward. Now you are coming to the next memory location, which is 7502. According to your program, this is the location where your second input will come. So you can see 13 here. Again say forward. Now this is the command to add the content of accumulator and memory location and store the result at accumulator. So you can see the output, which is 25, 12 plus 13 at accumulator. Again say forward. Here you are going to the location 7503. This is the location where you want your result to be stored. Then say forward. This command will move the content of accumulator into the current memory location. That means you can see finally say that you have attained the output at 7503, which is 25. Go to the last line, which is RST1. This is used to terminate your program. You have successfully generated the output of addition of two 8-bit numbers and the result is 25. You can stop here. Hello. Yes, sir. Hello. मेरी आवाज आ रही है सभी को? Hello. Yes, sir. Have you seen how we can manipulate the programming and get the result? वीडियो देखा आप लोगों ने अभी? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? हेलो Have you all gone through the video of this? Yes. कुछ समझ में आया ही अभी जो इसमें इन्होंने ये डिस्क्रिप्शन वगैरह जो था, ये कुछ समझ में आया आपको? देखिए मैं अभी आपको ये प्रोग्रामिंग का पार्ट है. इट इज एग्जैक्टली हैविंग टू पेजेस. क्लियर? दो इंटरफेस हैं इसमें. एक आपका एडिटर है जिसको असेंबलर भी बोलते हैं, और जो राइट साइड का है वो आपका रजिस्टर और मेमोरी और डिवाइसेस. क्लियर? जो सिमुलेशन का पेज है एग्जैक्टली, इसको हम सिमुलेशन पेज बोलेंगे. राइट साइड है. तो आप लेफ्ट साइड में जब आप उसमें मान लीजिए कोई एडिशन का प्रोग्राम है या सब्ट्रैक्शन का है या डिवीजन का है या व्हाटएवर इज दैट, तो आप लेफ्ट साइड में उसको एडिटर में जाके जब पेस्ट करेंगे, जैसा कि इसने स्टार्टिंग में बताया था इस वीडियो में. Welcome to 8085. देखिए मैं आपको This दिखाने window की कोशिश consists of करता two हूँ. parts. One is editor window. ये पहला देखिए, ये आपका एडिटर विंडो है और ये आपका सिमुलेशन पेज, वहां पे रिजल्ट आपका शो करेगा. ठीक है? Is output window. You write the program at editor window and assemble it. Then you can check the output at output window. The output may be stored at various locations and you can check it under the register tab for the accumulator, general purpose registers and current location. You can also check that same output according to memory address and its value. If you have connected your device to any other interfacing device, you can check the output at devices. Coming back to the editor window, suppose I want to perform addition of two 8-bit numbers. Then I will copy the code from the addition of two numbers under the heading code and result and will paste the same in the assembler. This program says that your program starts from address 7000H. You are taking the first input at 7501, the second input at 7502, and the output is generated at 7503.
The two input you are taking are 12 and 13. Now I am going to assemble this program. This program is giving me two options to assemble it. One, run all at a time, and the second is step by step. For your better understanding, I will perform step by step assembly. For this, change the starting address to 7000 as per your program and click on step by step. Go back to the register window in the output and click on forward. You can see a marker here which is highlighting the first line. That means currently you are executing the first line. According to this, your first input should come at location 7501 and you can see 12 at this location. Again press forward. It will move you to the accumulator. That means your value has been moved to the accumulator. Again say forward. Now you are coming to the next memory location, which is 7502. According to your program, this is the location where your second input will come. So you can see 13 here. Again say forward. Now this is the command to add the content of accumulator and memory location and store the result at accumulator. So you can see the output which is 25, 12 plus 13 at accumulator. Again say forward. Here you are going to the location 7503. This is the location where you want your result to be stored. Then say forward. This command will move the content of accumulator into the current memory location. That means you can finally say that you have attained the output at 7503, which is 25. Go to the last line, which is RST1. This is used to terminate your program. You have successfully generated the output of addition of two 8-bit numbers and the result is 25. You can stop here. I just forward this video again. So I think अभी कुछ clear हुआ आप लोगों को? Yes, sir. थोड़ा सा आइडिया लगा होगा ना कैसे प्रोग्राम करते हैं, कैसे we got the results, है ना? अच्छा, एक बात मैं इसमें कुछ चीजें आपको और बता देता हूँ कि जैसे दो 8-बिट नंबर मान लीजिए, दो है हेक्साडेसिमल या दो 8-बिट नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, क्लियर? तो उस एडिशन में ये भी हो सकता है हमारे पास कैरी जनरेट हो रहा हो, क्लियर? तो अगर कैरी, देखिए यहाँ पे एक फ्लैग रजिस्टर का पोर्शन आपको दिख रहा होगा राइट साइड, इट इज हैविंग राइट साइड फ्लैग रजिस्टर that is marked with the pink color. You can see I am just highlighting. दिख रहा है सभी को? ये जहाँ मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, ये दिख रहा है सभी को? मैंने बताया था ना कि जैसे जैसे आपका प्रोग्राम मूव करेगा वैसे वैसे आपकी बाकी सारी चीजें भी अपडेट होती रहेंगी। तो जैसे फ्लैग रजिस्टर है, तो देखिए फ्लैग रजिस्टर में आपका कौन कौन से फ्लैग हैं? साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग एंड कैरी फ्लैग, CY, क्लियर? तो इसमें आप देख सकते हैं कि को हमें अभी हमने जो प्रोग्राम इन्होंने वीडियो में बताया है, इसमें जो हम